Okay, can we start now? Yes, so hello and namaskar everyone. I'm Sulochana Ramodamu, your host for today's discussion. I'm a research scholar in the University of North Bengal. So, on behalf of Decoding Real Politics, I warmly welcome all the viewers and our speakers for today's live session. So, we have a new speaker today, Mr. Love Singh, and he is a research scholar in the University of North Bengal, and his interest areas focuses on border studies, particularly subnational boundaries, border conflicts, and so on. So, um, thank you for joining us, all the viewers. Now, uh, before delving into the discussion, I would like to set the context for the discussion. That is, I would like to give a brief background of this uh, topic, that is Siliguri Corridor, as you all can see on the screen itself. So, a brief background would be that this Siliguri corridor is often called India's chicken snake or chicken snake, which is a narrow land stretch in West Bengal that connects mainland India to its seven northeastern states. All military, civilian, and logistical movements to the northeast funnels through this narrow corridor, and it is bounded by Nepal to the north, Bangladesh to the south, Bhutan to the east, and Indian state of Bihar to the east. Since independence, this corridor has long shaped India's defense planning and regional connectivity strategy. Proximity to the international border increases the risk of cross border infiltration, smuggling, and espionage. On top, China's presence in the Doklam Tri Junction and growing Bangladesh China cooperation, it may also pose a threat to this region. So, today's discussion would cover why and how Siliguri corridor is vulnerable, and how it poses a challenge to India's national security, what steps has been already taken by India, or what additional actions should it pursue diplomatically, militarily, and through improved connectivity to address this strategic vulnerability. So, on these issues, our speakers would be discussing, expressing their views. So, before that, I have already introduced our new speaker for today, that is Mr. Lop Singh, and we have other speakers. They are Mr. Apurva and Mr. Kalyan. And unfortunately, for some unavoidable reasons, two of our speakers would not could not join the session today. They may join later sometime. So yeah, please, the speakers, you may proceed with the discussion. Thank you. Yes, Lobda. So, yes, thank you very much, first of all, for inviting me in such a uh, insightful forum where you people always bring something very relevant to so far the international politics and relations are concerned. Thank you for very much for the brief introduction and setting the foundation for today's discussion. Sulochana. So first of all, let me start with the giving a which Sulochana has already given, and based on that foundation, that the metaphorical expression that we see as chicken neck, a stretch of land around city of Siliguri, which is around 20 to 22 kilometers, which is perhaps the narrowest section in terms of geopolitical and geo-economical corridor that connects the mainland India with the northeastern territories, including the Seven Sisters and also Sikkim. Now, when it's come to Siliguri as a corridor,
I mean to say the most of perhaps the predominant international outlook towards the region is geopolitical one. But along with this geopolitical, the importance this region is having, which is of course strategically important because it maintains the India's integrity by connecting the northeast with the rest of India. The space which is historically remain a space of mobilities among the communities as well as different regimes that we see here from since this before the British and even in the during the British time. Then, along with the geocultures, there's also a space of spatiality because we see that this is a multi-ethnic space where you have lots of people, living here, belonging to different communities, including different migrants, being a commercial city, which links, of course, different trade networks, etc. And city has been flourishing for many decades, and of course, the demography is increasing. Now, to point out today's and again, it's also a space of connectivity, which is very important, I guess, from the geopolitical point of view, because it connects not only the national spaces when it's come to northeast or India, but also international spaces like Nepal. Nepal and Bhutan are being connected to India and then to Bangladesh, and you have a transit. It is a kind of a transit point and facilitated such trade, commerce, etc., etc. Now, from the point of sense, the discussion is about the Siliguri corridor, navigating the vulnerabilities, especially in this region. Now, there is a one fundamental question that we may be dealing with this session is why the Siliguri corridor is vulnerable. Now, my position would be two facet. The first one is that let's consider its vulnerability or with China factor and without China factor. Uh, of course, the presence of China, especially this transaction that we are having in Bhutan, this Tibet, and then we India, that is the Chumbi Valley, and then there is a kind of the ties, military ties that I'm not sure if it is a military ties between Bangladesh and China, and they are they are a kind of a coming very close to India's the southern region that is in Rangpur of Bangladesh, Lalmonirhat airbase. So this is very concerning, of course, when it's come to China. But in this discussion, probably, please give me a liberty to bring two aspects to it. One is without China factor, another is the China factor. Now, the reason from the point of view of ecology and geography, we of course know it's a very difficult terrain, which having a Himalayan sub region. And having said that, and because of this difficult terrain, we have the lots of natural, I would say, disasters or natural, the calamities that we face in terms of landslides, etc., etc., which of course is a major challenge to when it's come to regional connectivity, maintain the connectivity in terms of regional connectivity, of course. Now, the second thing is that the second one is the geopolitical location that the region is having. The situation in Bangladesh, especially the post Hasina exile, has been jeopardizing a kind of the regional stability because of the political instability in Bangladesh. And the growing anti-India sentiments, of course, is also giving a major threat to the region, along with the Bangladesh closer ties with the China. Of course, this is also a challenge. And
and we already know since Bangladesh came into existence in 19 since 1971. Then there is a there is a major illegal immigrants, kind of a demographic pressure that is we are having to from that side of the border. Now, I mean to say, recently the recent developments that we see, the closing, Bangladesh ties, growing ties with the Pakistan, and also involvement of, I'm not sure if it is there, but as per the media reports, that growing ties with the Pakistan and also ISI is also a major concern to so far as this region is concerned. And also there have been news in the last year that the terrorist outfits that are active in West Bengal, particularly, for example, Ansar al-Islam, Jamaat-e Mujahideen, etc., etc. Now, along with geopolitical location, there is another thing that when it's come to vulnerability without China factor, it's the internal politics that we are seeing in the region, which is the region is perhaps a very volatile and fragile. And we have seen a history of ethnic unrest, demand for statehood, etc., etc., which of course pose a internal a kind of a disturbance, a threat to the stability of the region. And again, the expansion of the city, which is the population expansion, which is alarming in range. And that's a region where there is a one question often raised, that whether whether this expansion or city expansion or development we are consistent with the strategic point of view what the central government is having, whether the state government or the central government are having a kind of a similar point of view regarding this particular corridor or this particular city. Now, lastly, from the point of view of why it is vulnerable without having China factor, is that Siliguri is an important as it connects northwest, which historically remained very volatile when it's come to northeast, which is fragile due to what Sanjeev Borwa says, durable disputes that is going on in the northeast, which are less developed and which is very highly dependent on the mainland India. And there have been a history of insurgencies, ethnic conflict, and of course the porous border with Myanmar, the disputed border with China, secessionist forces, which is major challenge to India's integrity and unity. So considering, so it's not only that China that is a prudent factor or important factor so far as the vulnerability of Siliguri corridor is concerned. But of course, these things that I have mentioned, starting from the ecological vulnerability, geopolitical location, internal politics, and the expansion of the city, demographic pressure, and also fragility and volatility of Northeast historically, which remained such case. Now, the second point, which is very important, which is, of course, the agenda of the discussion, that is how this is being vulnerable, why this is being vulnerable from the point of view of having China factor. Now, when it's come to this continent is concerned, that China remains a major tough competitor to India, both territorially as well as economically, and there have been competition. So, having said that, I guess we already know about the string of pearl policy that China is having and developing different its presence in a different strategic position in order to create a kind of a pressure or deterrence to India. Uh, but what is important in this regard is China's close proximity to the Siliguri corridor, especially in the which I have already mentioned in the Chumbi Valley, where it is said that as per the satellite images that China is building border villages, which they locally call as Xiangkang or something,
And there have been not only these border villages, they are also this could be a kind of you know this could be used as military establishment to launch a kind of a future kinetic warfare. If not, but this is a somewhere unknown kinetic deterrence that we are having because of this close proximity. But what is more concerning, which is the growing ties between China and Bangladesh in the UNIS regime, and especially the recent statement given by UNIS regarding this landlocked and quote unquote the guardian of the ocean. Of course, that creates a kind of suspicion when it's come to the Siliguri Corridor from the strategic point of view. And in fact, the recent ties on this transforming this World War II airfield in Rangpur, that is Lal Munirhat, to a kind of for as a airbase with a Chinese presence. That is again creating a kind of concerns for India. Now, having said that, and considering all the vulnerabilities that we are having in this region, what are the responses that the India is having towards these developments that are undertaking in this region? I guess I see a kind of sevenfold, not a sevenfold, but a kind of a fivefold policy, fivefold responses that we can figure out what India is, responding to these all developments that are happening. The first one is, of course, we all know the proactive defense, which is to say, in other word, to let me put in other word, like prepare rather than react. Um, and it has altogether turning Siliguri Corridor as a fortress with lots of deployment of forces, including ITBP, BSF, and we know our near this the station military station that we are having in Sukna, Trisakti military station, and also the army and others. Along with that, we also see that major development of connectivity to the military establishments that we are having in Hasimara, for example. We have a kind of a placed this S-400, MiG, MiG, and also Rafale. We also increasing our surveillance in the region. Also focusing in the Indian government is focusing reboosting connectivity for fast mobilities of the this security personals. Now, there is another thing that is government is also focusing on. Indian government is focusing on is developing the infrastructure and connectivity in the region, including Asian highways, national highways, uh, and in some region underground tunnels are there. We are also working on the robusting the traffic and making it efficient for mobility, and also robusting this rail and road connectivity to the military and commercial points in order to in order to respond any sort of future developments if it goes or adversaries against India. Now there is another the third response that we see is India is developing alternate connectivity. We have fast tracking alternate connectivity projects, I mean to say, sidelining dependency on Bangladesh, and also reducing the dependency on the perhaps the only sovereign land route that we are having through Siliguri Corridor. We are reducing dependency on that as well. Uh, so Uh, so when it's come to this alternate connectivity, we have seen in the government is focusing on in fact Siltway port that is in Myanmar has already been developed. Of course, now they are developing the a kind of highway
from Siltway to Silchar. So they are connecting Kolkata to Siltway. From Siltway to Silchar, they are creating a kind of a highway for as an alternate route or connectivity to connect India, mainland India, to northeastern region. And then, of course, we also have seen a kind of trilateral highway to connect Manipur with the South Asia through India, Myanmar, and Thailand. So, of course, this all is somewhere a kind of a response to the kind of reducing a kind of a dependency on Siliguri Corridor and also finding an alternative to Bangladesh. Now, along with that, I mean to say, India is also focusing on developing the northeast region, particularly this the states that we are having there in terms of they are investing more. They have create a network of connectivity, road, and developing railways and everything. Also, as a part of uh, Act uh, uh, Act East policy, and also that we see that major projects has been announced last this year, and in terms of also investments from major industry groups like Adani and Ambani in Assam. Also, different corridors that we see in Meghalaya and also in the other part of the region. And BRO also constructing road in Arunachal Pradesh reaching to the China border. So these are all a kind of making the fragile region into a developing region and perhaps the self making it self-sufficient. So in case if if there is a kind of instability in Siliguri corridor, so eventually Northeast can may have a potential to survive its own self. Now, along with all these things, I also see a kind of offensive responses towards the development in terms of the deterrence India may be creating for the for some sort of deterrence they are creating in terms of uh, we have seen a kind of statements from political leaders in terms of uh, warning to Bangladesh and also talking about Rakhine region, which also have a similar characteristics of Siliguri corridor. And in 8th and 9th May this year, we also have Tista Prahar field exercise that was undertook near Bangladesh border in the Tista field. So this could be a kind of a scene from the offensive point of view. But along with this, what I have already mentioned while talking about Siliguri as a different, space, multi-layered space, I talked about it's a geocultural space. It's a space where we share cross-cultural relation with the people. We have people-to-people relation. So, what happened in the post Hasina exile is that even before before Hasina is that there have been a growing anti-India sentiments in Bangladesh, I guess. So, in my point of view, the India should also focus on the soft power diplomacy by rebuilding trust with the neighboring countries, including increasing these pro-India sentiments and by a kind of this appealing to this cross-cultural ties, cultural continuity, and etc. So these are the responses that I see so far as you know these developments are concerned. So thank you very much. This is it from my side. So over to you, the host. Hello, Kalyan. Kalyan. Kalyan, are you there?
Hello, Kalyan? am I audible? Am I audible, Dada? Yes, yes. Yes, yes. Go ahead. uh, Lobda has comprehensively discussed almost corridor. Uh, Very interestingly, Lobda. Uh, Now, as that South Asia, um, how this Siliguri corridor became, um, uh, what should I say? मतलब recently सिलीगुड़ी कॉरिडोर कैसे ऐसे फ्रंट लाइन पे आ गए अभी साउथ एशियन जो जियोपॉलिटिकल जो डायनामिक चेंज हो रहे हैं तो मैं अ, बांग्लादेश के जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए एंड उस चाइना के साथ उसका मतलब recent alignment of Bangladesh with China and Pakistan, how it impacted the northeastern region and particularly the Siliguri corridor. Mm, as we have seen that Siliguri corridor just a 22 km narrow lifeline that connects the mainland India with the northeastern region. Uh, it Hello, hello. Am I Continue. audible, Dada? No. Okay. Mm-hmm. सो रिसेंटली जो साउथ एशिया में जियोपॉलिटिकल चेंजेस हुए अ, इस हिसाब से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये और ज्यादा वनरेबल हुए हैं ये मेरा पहला आर्गुमेंट है तो उम, हसीना गवर्नमेंट जब थे तब इंडिया के साथ ठीक ठाक रिलेशन थे इस बॉर्डर इलाका में हसीना गवर्नमेंट जाने के बाद जब ये इंटरिम गवर्नमेंट यूनिस आया तो इसका मोटो ही रहा कि हाउ टू एंटागोनाइज इंडिया एंड rebuild its relationship with China and pivoting towards पाकिस्तान इस स्ट्रेटेजी में ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और सिलीगुड़ी कॉरिडोर और ज्यादा वल्नरेबल होता है एंड इट डिमांड्स मोर अटेंशन फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव लॉबदा ने जैसे बोला है कि ये जो यूनिस का चाइना में जाकर बोलना कि द बांग्लादेश is the so-called only guardian of the ocean and northeastern region are landlocked. तो ये बांग्लादेश का मेंटेलिटी दिखाता है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कैसे देखते हैं ना ये एक बांग्लादेश का रिटायर्ड मेजर जनरल फौजुल रहमान है ऑपरेशन सिंदूर के पहले ये इसका एक स्टेटमेंट था उन्होंने पोस्ट किया था कि बांग्लादेश शुड कंसीडर ऑक्युपाइंग इंडियाज नॉर्थ ईस्ट उन्होंने क्या कहा था कि बांग्लादेश शुड कंसीडर ऑक्युपाइंग इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन विथ चाइना इफ इंडिया अटैक पाकिस्तान ये रिटायर्ड मेजर जनरल था बांग्लादेश का तो ये नॉर्थ ईस्टर्न के बारे में इसका अप्रोच था कि ये चाइना के साथ उसको ऑक्युपाई करना चाहिए अगर इंडिया पाकिस्तान को अटैक करे ये पहलगाम अटैक के बाद और ऑपरेशन सिंधु से पहले था स्टेटमेंट
ये ऑपरेशन सिंदूर से बात कुछ न्यूज़ आए थे कि पाकिस्तान के हैकर के साथ मिलके बांग्लादेश के कुछ हैकर इंडिया में साइबर अटैक करने की कोशिश की है। तो ये जो रिसेंट डेवलपमेंट है और बांग्लादेश अप्रोच, ये अप्रोच अभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पहले जितना जियोग्राफिकली पहले से ही वल्नरेबल था, ये पता है हमको। पर रिसेंटली ये रीजन और ज़्यादा वल्नरेबल हुए क्योंकि रिसेंट जो हमारे नेबरिंग का जो डेवलपमेंट हुआ, ये दर्शाता है कि वी नीड्स मोर व्हाट शुड आई से, ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एम्फेसाइज करना चाहिए इस रीजन पे। नाउ लोब्दा ने जो इंटरनल पर्सपेक्टिव से बात की है कि इंटरनली, नॉट ओनली एक्सटर्नली, but also internally the Siliguri corridor is very much vulnerable, whether it is ecologically, um, some insurgent groups or some traffickings, money launderings। तो ये जो पहले से ही था इस रीजन में, ये बांग्लादेश में अभी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इससे चलते ये इंस्टेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगा। इसका कुछ एग्जांपल है कि जैसे हमने देखा कि आफ्टर कमिंग टू पावर द यूनिस गवर्नमेंट, जोशीमुद्दीन रहमान, who is the chief of the Ansarullah Bangla team, ABT, uh, which is an affiliate or the proxies of Al Qaeda, इसको जेल से बाहर निकला है। तो पहले जो हसीना गवर्नमेंट जो डिक्लेयर टेररिस्ट को उसके ऊपर इंडिया के कुछ एक्शन तो इंडिया के साथ मिलकर लिया था। अभी यूनिस गवर्नमेंट आने के बाद जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था, वो जेल में बंद था, उन लोगों को छोड़ रहे। उनमें से एक था एबीटी का जोशीमुद्दीन रहमान, हु वाज द चीफ ऑफ एबीटी terrorist group, which is an Al Qaeda affiliated group। वहाँ वहाँ से निकलने के बाद जोशीमुद्दीन जोशीमुद्दीन रहमानी उसका नाम है। ही asks the West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee to declare independence from the Modi's rule। So इतना बोल्ड और एनकरेज इतना प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट आ रहे थे एक टेररिस्ट जो कि पहले जेल में बंद थे, फिर यूनिस गवर्नमेंट उसको बाहर निकला। सो ये दिखाता है कि देयर हैव बीन considerable increase in Islamist fundamentalism, militant group. It would affect in the northeastern state and also the particular Siliguri regions। नो ये एक क्या मैसेज दे रहे हैं कि पहले तो हम ये इंसर्जेंसी ग्रुप्स से लड़ रहे थे, टेररिस्ट ग्रुप से लड़ रहे थे फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड। अब हमको बांग्लादेश साइड से भी लड़ना होगा, तो इट विल बी टू फ्रंट टेररिज्म प्रॉब्लम, वन साइड फ्रॉम द पाकिस्तानी एंड फ्रॉम द बांग्लादेशी साइड। सो इंडिया को अब ये फेस करना होगा। इससे चलते ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो इंसर्जेंट ग्रुप है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, ये और ज्यादा बढ़ेगा। और ये लोब्दा ने जो बात बोला था, इंटरनली और ज्यादा वल्नरेबल होगा। तो देयर इज नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द एक्सटर्नल थ्रेट एंड इंटरनल थ्रेट। समटाइम दे कैन combinedly vulnerable, makes the region more vulnerable। अपूर्वा, नाउ आई थिंक अब आप कुछ ऐड करो, फिर
अगर मैं चाइना पर्सपेक्टिव इसके बाद ऐड करूं? ना ना, चाइना पर्सपेक्टिव ऐड कर दो, देन वी विल कम टू द स्टेप्स गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी टेकन एंड व्हाट शुड एडिशनल स्टेप्स गवर्नमेंट कैन टेक इन दिस रिगार्ड। पहले चाइना खत्म करो, उसके बाद हम फिर स्टेप्स में जाएंगे। आई थिंक लवदा हैज ऑलरेडी स्पोकन ऑन स्टेप्स आल्सो कि क्या क्या स्टेप्स लिया गया है एंड what another or additional steps government can take in this regard। इसके बारे में आई थिंक लब्दा ने भी छोड़ा होगा, तो उसमें हम लब्दा के भी रिमार्क्स लेंगे। मैं भी लास्ट में आके बोलूंगा, फिर तुम भी बोलना। सो प्लीज टेक चाइना हियर, ब्रिंग चाइना हियर, हाउ चाइना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट दैन दिस। इम्पोर्टेंट तो नहीं हमारे लिए, वो थोड़ा काइंड ऑफ सर का दर्द ही है। Okay. Here is another point that ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ इंडिया का अलाइनमेंट भी नहीं, रिसेंटली हमने देखा था कि बांग्लादेश ने वो वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में और एक बांग्लादेश रिसेंटली एक्टिवेटेड द Turkish made TB2 drones near the West Bengal and Meghalaya border. Uh, Now TV is noted for its operational activities, operational activeness. It's a demonstrate in, how should I say, मतलब ये तार्किश ड्रोन थे जो डिफरेंट रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में ऑलरेडी टेस्ट हुए, यूज्ड हुए। तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर में बांग्लादेश ने रिसेंटली एक्टिवेट किया है। It can fly over 24 hours and can operate within a radius of about 300 kilometers. So it's a strong Turkish-made drones, ये जो बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर में बांग्लादेश ने रिसेंटली एक्टिवेट किया है। तो ये एक रिसेंट मतलब बांग्लादेश रिसेंटली बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट चाइना और तुर्की से कर रहे, तो ये नॉट ओनली पाकिस्तान, तुर्की ऑल्सो यहाँ एक एक्सिस बना रहे, पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश और चाइना मिलकर, जो ये शेख हसीना गवर्नमेंट टाइम पे इतना एक राइवल पावर ब्लॉक नहीं था इंडिया के सामने, जो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को अब फेस करना पड़ेगा। Now coming to the Chinese point, हमने रिसेंटली देखा कि न्यूज़ आ रहे थे कि चाइना लालमोनीरहाट जो एयरबेस है उसको बांग्लादेश को हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा लालमोनीरहाट एयरबेस को डिफेंड करने में। तो एक शॉर्ट हिस्ट्री है लालमोनीरहाट एयरबेस का। ये it is just 12 to 15 kilometer away from the Indian border and 135 kilometer away from the Siliguri corridor. So from the distance we can assume mm, the what should I say, हम ये डिस्टेंस से देख सकते हैं कि ये अगर चाइना इसको असिस्ट करेगा, चाइना नॉर्मली कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश को सिविलियन पर्पस के लिए ये असिस्ट करेगा इसको रिवाइव करने के लिए, लेकिन ये चाइनीज की हिस्ट्री से पता चलता है कि ये जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं वेदर इट इज फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस, ये बाद में इसको डुअल पर्पस में यूज करता है। ये it was originally built in by the Allied Power in 1931. Then after the independence,
पाकिस्तान ने इसको रीओपन किया था इन 1958 फॉर सिविलियन यूज। उसके बाद शेख हसीना गवर्नमेंट 2019 में एक इसके पास में ये इसके आसपास ही नहीं, आसपास ही, हाउ शुड आई से, यहाँ एक एयरोस्पेस यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान कर रहे थे हसीना गवर्नमेंट, और ये अभी ऑपरेशनल भी है वो यूनिवर्सिटी। तो अभी इंडियन ऑब्जर्वर फ्रॉम विवेकानंद इंडस्ट्रियल फाउंडेशन ORF ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ अगर चाइना को चाइना अगर आ जाए, whether it is by BRI project or by aiding Bangladesh to revive its airbase, ये मॉनिटर करने के लिए, सर्विलेंस करने के लिए यूज करेगा ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न एंड वेस्ट बंगाल रीजन को, जो एक स्ट्रेटेजिक लिवरेज होगा चाइना के लिए। ऊपर आई थिंक मेरा हो गया ये चाइना पॉइंट, सिर्फ रिसेंट न्यूज का डेवलपमेंट से ये बोलना था। अच्छा, thank you Lobna and Kollan. Both are actually touched upon the things that are actually very important, right? When we talk about the Siliguri corridor, क्योंकि इसमें I think Lobna ने बात किया था on Siliguri corridor is a strategic vulnerability for India with China and without China. How it is a vulnerable, why it is a vulnerable, very narrow space. So इसमें दादा ने बोला था कि without China there are so many reasons like the very instability in northeastern region because of insurgency or some non-state actors or smuggling and other drug issues or arms supply. These are very important. These are very miscreants happenings जो कि होते आ रहा है। तो ये हो गया एक काइंड ऑफ बोल सकते हो, और स्पेशली क्योंकि अंडर डेवलप्ड रीजन सिंस इंडिपेंडेंस, तो इसके लिए भी एक जो काइंड ऑफ कनेक्ट होता है with northeastern states people and the mainland India, तो वो कनेक्ट भी नहीं बन पाया बिकॉज समटाइम अराउंड आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ ऐसा बोला जाता था। आई थिंक मैं वो शब्द भूल गया, हिंदी में एक शब्द था ना कि कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पीपल्स आर एक्चुअली दे आर ट्रीटेड एज सेंट्रल गवर्नमेंट आर ट्रीटेड एज ए स्टेप मदर, ऐसा कुछ मैं याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है, कुछ ऐसा था। तो व्हाई दिस थिंग्स आर अराइजिंग बिकॉज कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ बोल सकते हो कि डिस्ट्रस्ट या फिर कुछ ऐसा टाइप का, या फिर कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता था। एक तो कारण वो हो गया। दूसरा कारण है कि द टेरेन, क्योंकि टेरेन भी उतना ज्यादा प्लेन नहीं है, मार्शी लैंड है। स्पेशली अगर आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देखेंगे तो दिस इज मार्शी लैंड, क्योंकि अभी जो आप लोगों ने बात किया था आई थिंक अबाउट तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज भी अगर आप केयरफुली देखोगे वो वीडियो, वो ज्यादातर एक्सरसाइज टैंक को मार्शी लैंड में चलाया गया है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर टाइम में इस रीजन में बारिश होते हैं या फिर रेनी सीजन होता है, तो मार्शी लैंड में कैसे मिलिट्री अपना फॉरवर्ड पोजीशन लेंगे, इसमें किया गया। और दूसरा रीजन अगर आप लोग सोचोगे कि जैसे विद चाइना, दीज आर द रीजंस दैट मेक्स दिस कॉरिडोर और दिस रीजन वल्नरेबल। without China, right? Without China and with China, we all know China होगा तो vulnerable होगा ही, because I just want to remind you the 2017 Doklam standoff, right? You all know about the dispute, actually not between India and China, it is between Bhutan and China, right? And वहाँ पे third country बोल सकते हो, क्योंकि the India interest also stake on this issue, तो इसीलिए इंडिया भी वहाँ पे
इन्वॉल्व हो गए थे। तो उसको लेके आई थिंक 75 डेज का स्टैंड ऑफ चला था। तो क्योंकि अगर हम अभी मैप में नहीं दिखा पा रही हूँ, अगर मैप देखेंगे तो द डोकलाम ट्राई जंक्शन एकदम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एकदम ऊपर ही है। तो वहां तक चाइना आ जाना या फिर वहां तक चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, इसका मतलब क्या है? व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि इन ए क्राइसिस टाइम हाउ दे कैन कम दिस कॉरिडोर और कम दिस लैंड वेरी फास्ट। तो इसके लिए उन लोगों ने चाहे बुलेट ट्रेन उन लोगों ने चलाया है। कहाँ पे? पूरा तिब्बत में। तो ये तो एक है, उनका थ्रेट है, चाइना का थ्रेट है। बट व्हेन चाइना aligns with these small states, for example बांग्लादेश, जब इसके साथ फिर अलाइंस होता है, फॉर एग्जाम्पल लब्दा mentioned or talk about the लालमनिरहाट एयरबेस। एक्चुअली एज फार एज माई नॉलेज गोस कि वो लालमनिरहाट का जो भी एयरबेस था वो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक पुराना एयरफील्ड है। वैसा ही टाइप का एक एयरफील्ड हमारा असम में एक्चुअली मेरे डिस्ट्रिक्ट के रूपसी बोल के एक जगह है, वहां पे एक एयरफील्ड था। वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का एयरबेस था, लेकिन उसको अभी ऑपरेशनलाइज किया गया फॉर सिविलियन पर्पस, नॉट फॉर मिलिट्री पर्पस। बट व्हाट वी आर सीइंग नाउ कि चाइना ने शायद चाइनीज ऑफिशियल्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स कि लालमनिरहाट को फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है, एंड विच इज बेस्ड इन वेयर रंगपुर डिवीजन, राइट, वेरी क्लोज टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो मुझे ये लगता है कि जब ये कंट्रीज अलायंस में आते हैं या फिर अपना गठबंधन बनाते हैं, तब ये ज्यादा ही एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है ना। क्योंकि इट इज वेरी मच इम्पॉसिबल फॉर एनी कंट्री टू फाइट इन एवरी फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर एक्चुअली पॉज किया गया है, एंड ईस्टर्न फ्रंट नॉर्दर्न फ्रंट दोनों में ही आपका हो गया चाइना, एंड द ईस्टर्न फ्रंट इन द साउथ ईस्टर्न फ्रंट आप अगर देखो तो इसमें फिर बांग्लादेश 4000 समथिंग आपका हो गया बाउंड्री शेयरिंग। तो ये चाइना के साथ जब ये कंट्री मिलता है तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, और इस कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए या फिर इस कॉम्बिनेशन को एड्रेस करने के लिए हाउ इंडिया इज नाउ टेकिंग स्टेप्स और स्ट्रेटेजाइज इस मिलिट्री। तो इसमें मैं अगर थोड़ा सा देखूंगा कि अगर हम थोड़ा इतिहास में इफ वी गो बैक टू द वेरी 1950s, अगर हम देखेंगे चाइना के साथ हमारा रिश्ता अच्छा ही था। क्योंकि उस टाइम में 1954 में चाओ एन लाई चाइनीज प्रीमियर फर्स्ट टाइम इंडिया में आए थे, और इंडिया के साथ उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर नेहरू, उनके साथ जो 5 प्रिंसिपल्स जिसको पंचशील नीति हम लोग बोलते हैं, वो साइन किया गया था। और वो नीति अगर आप पढ़ोगे, वो देखोगे तो उसमें फ्रेंडशिप ही फ्रेंडशिप है, mutual coexistence, mutual non-interference, mutual non-aggression, these are the actually points। तो उस वक्त तक सब ठीक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन 1962 और फिर वो सब कुछ बिगड़ जाता है। फिर उसके बाद अगर हम इतिहास में जाएंगे तो आई थिंक दिस रिलेशनशिप एक्चुअली take forward by Rajiv Gandhi in 1988 when Rajiv Gandhi visited China after 1962 war। फिर उसके बाद 2005 में कुछ अंडरस्टैंडिंग वर्किंग ग्रुप बना, उसके बाद 2013 इन सब में बना, लेकिन उसके बाद 2017 फिर से वही एंड स्मॉल स्क्रिमिशेस ये सब होते आया है। लेकिन 2017 एंड देन 2022 द गलवान वैली क्लैशेस, उसके बाद तो फिर इंडिया का स्ट्रेटेजी अगर देखोगे तो क्योंकि लब्दा ने ऑलरेडी स्पोक ऑन द कनेक्टिविटी एंड व्हाट आर द थिंग्स आर गोइंग, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं बस एक आयर पर्सपेक्टिव से ग्रैंड नैरेटिव ग्रैंड स्ट्रेटेजी की बात करूंगा। जैसे अगर 2022, क्योंकि आप लोग अगर इफ यू रिमेंबर दैट देयर इज ए ग्रुपिंग कॉल क्वाड, ये भी 2007 में आया था आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम 2007-8 में। लेकिन उस वक्त चाइना के साथ हमारा रिलेशन को देखते हुए हमने उस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं वही पुट अंडर द कारपेट, उसको फिर हमें 10 साल तक फ्रीज कर दिया। फिर 2017 में व्हेन डोकलाम इंसिडेंट्स हैपेंड, तब हमने उसको फिर एक्टिवेट किया। फिर आफ्टर 2020 गलवान वैली क्लैशेस, उस चीज को और भी ज्यादा ही हमने क्या कर दिया, उसमें गतिविधि ज्यादा होने लगा। आई मीन एक्टिविटीज एंगेजमेंट बढ़ गया है। क्यों?
because this is a part of grand narrative or grand strategy of India, that how we can counterbalance China. एंड उसके लिए अगर हमें बड़े पावर से, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बैंड वैगन करना, बिकॉज वी ऑलवेज reserve our strategic autonomy or strategic independence, which are already we have talked in the last previous session. तो हम एक काउंटर बैलेंस की कोशिश कर रहे हैं इस नैरेटिव में। और जो अगर हम हमारा इंडिया का दूसरा अगर स्ट्रेटेजी देखोगे तो लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसमें क्या आता है, इसमें कहीं ना कहीं हमने नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, आसियन कंट्री से जोड़ने का कोशिश किया है, सो दैट नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो ग्रो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम दिस रीजन्स। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अगर आप देखोगे रिपोर्ट फ्रॉम आई थिंक टुमारो और उससे एक दो दिन पहले, आई थिंक इन फॉर द फर्स्ट टाइम आई बिलीव कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट होस्ट किया है प्राइम मिनिस्टर ने, along with the eight नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम। और शायद इसमें एक प्रधानमंत्री मोदी का एक होता है ना, वो नाम देना, अष्टलक्ष्मी कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा नाम दिया है उनके हिसाब से। फिर इन्वेस्टर्स को वहां पे इनवाइट किया, वहां पे वो 2 दिन चला। तो ये सब क्यों कर रहा है? बिकॉज टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी। एंड अगर इसमें कनेक्टिविटी की बात करूंगा तो मैं आई जस्ट वांट टू शो यू वन थिंग that this is I think if you see, so this is the new प्रोजेक्ट प्रपोज हाई स्पीड कॉरिडोर, जो कि हमको मालूम है कि हमारे पास जो कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था वो कोलकाता से सिटवे पोर्ट तक जाता है, फिर सिटवे पोर्ट से वो आइजल तक वो हमें कनेक्ट करता है टू द नॉर्थ ईस्ट। बट अभी इसमें एक प्रपोज्ड हाई स्पीड कॉरिडोर रोड हम बनाने की प्रपोज किया है, जो कि शिलोंग से सिलचर तक आएगा और शिलचर से फिर वो एक कनेक्टेड रोड होगा जो आइजल तक कनेक्ट करेगा। तो दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग, और बोल सकते हैं स्ट्रेटेजाइजिंग आवर पॉलिसी। और हम इसमें कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जो भी कॉन्जेस्टेड या फिर जो भी वहां पे ओवरलोड या फिर ओवर डिपेंडेंसी को हम यहाँ पे चेक करें या फिर कट करें, ताकि हम बाईपास कर पाए इधर से। ये हो गया। और दूसरा एक कनेक्टिविटी में अगर आप बोलोगे तो उसमें मैं और एक चीजें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे हमने अभी कुछ ही दिन में ये रिपोर्ट आया था कि बस हम कुछ ही दिन में आई थिंक एनजीपी से या फिर एनजीपी से सिक्किम तक का ये ट्रेन लाइन खुलने वाले है, जिसमें कि आई थिंक 22 की 14 टनल्स है और 22 ब्रिजेस है। उनमें से क्योंकि ये जो रेल लिंक है ये सेवक से रोंगपो तक कनेक्ट करेगा, उसके बाद फिर ये कनेक्टिविटी सिक्किम तक जाएगा। सो दीज आर द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और कनेक्टिविटी थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड, राइट। ओके, लेकिन उसके साथ साथ अब ये तो हो गया इधर का कनेक्टिविटी। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगे कि क्या और करना चाहिए, आई थिंक गवर्नमेंट ऑल्सो डूइंग ऑन दिस रिगार्ड, कि जो हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और इंडियन सिक्योरिटी पॉलिसी कैलकुलस कहीं ना कहीं वो क्या रहा है, इट वाज और इट हैज बीन स्टिल कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी थ्रेट्स, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं लैंड बॉर्डर से सिक्योरिटी थ्रेट्स ज्यादा आया है, क्योंकि वी फॉट 4 और 5 वॉर विद पाकिस्तान एंड 1 विद चाइना। तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक जो भी आउटलुक है, जो भी सिक्योरिटी इश्यूज है, वो ऑलवेज कॉन्टिनेंटल रहा है, और जिसके लिए हमारा डिफेंस बजट का मोस्ट ऑफ द पोर्शंस आर गोज ऑन द आर्मी एंड एयरफोर्स। बट लेकिन यहाँ पे एक दूसरा पर्सपेक्टिव मैंने पढ़ा है, जो अभी कुछ आई थिंक दर्शना एम बरुआ एक बुक उनका एक बुक आया था 2024 में, कॉन्टेस्टेशन इन द इंडियन ओशंस, आई थिंक ऐसा कुछ नाम है। तो उसमें उन्होंने ये बोला है कि ओके, वी आर स्ट्रेटेजाइजिंग आवर डिफेंस पॉलिसी और पोस्टरिंग आवर डिफेंस इन द नॉर्थर्न बॉर्डर, साउदर्न बॉर्डर, इन कॉन्टिनेंटल फॉर कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी। बट क्या हम कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी को थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं टू इंक्रीज आवर सिक्योरिटी इन द ओशन? फॉर एग्जाम्पल, I just want to show you one particular image. See, this is called the Indian Ocean, right? This is Indian Oceans. You see, in this
यहाँ पे आपका हो जाता है मलेशिया और सिंगापुर के आगे आपको आता है एक स्टेट ऑफ मलाक्का, जो कि एक बहुत ही छोटा आई थिंक कॉरिडोर स्ट्रेट है, जहां से चाइना का 78% टू 80% अप्रोक्स सप्लाई, एनर्जी सप्लाई होता है। आई थिंक ये इमेज ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, सो दिस इज द रीजन, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, हाँ, यहां से होता है। तो एंड इंडिया's वन एंड ओनली ट्राई सर्विस बेस्ड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे हमारा ट्राई सर्विस स्टेशन है। अगर हम इंडियन ओशन को या फिर स्टेट ऑफ मलाक्का में अपना सिक्योरिटी को और इंक्रीज करेंगे और हम रोबस्ट एक सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी बनाएंगे, तो इसमें फिर चाइना का जो एनर्जी ट्रांजिट है 70 टू 80%, वो तो इधर से ही होता है। सो इफ चाइना वांट्स टू डू एनीथिंग इन द नॉर्दर्न बॉर्डर और द ईस्टर्न बॉर्डर, so we can also push Chinese or block Chinese सप्लाई चेन्स इन दिस ओशंस। तो यहाँ से हम, यहाँ पे एक कहावत है ना हिंदी में, बटन यहाँ पे दबाएंगे आपके वहां पे मतलब खबर चला जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे अगर अपना सिक्योरिटी को और रोबस्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी में ये बोल रहा हूं मैं, हम चाइना को यहाँ पे भी रोक सकते हैं कि देखो, अगर तुम हिमालयन बॉर्डर्स में कुछ भी करोगे ना, तो हम फिर यहाँ पे भी आपको आसानी से आने जाने नहीं देंगे। वी विल इरिटेट यू, हम आपको एनॉय करेंगे, राइट। तो ये एक हो गया। और उसके साथ साथ जो मैंने अभी बोला, जैसे कि क्वाड हो गया, डिफेंस एंड मिलिट्री काइंड ऑफ कोऑपरेशन विद यूएस, विद जापान और विद लाइक माइंडेड कंट्रीज। तो इसमें भी चाइना को, इंडिया को काम करना चाहिए और भी स्पीडी मैनर में, ताकि थोड़ा सा काउंटर बैलेंस हो जाए। क्योंकि आप, हम अगर जब रियलिज्म पढ़ेंगे तो उसमें यही होता है, क्योंकि व्हेन देयर इज ए एनर्की, वहां पे कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, और इफ यू आर सिटिंग इन ए प्लेस जहां पे तुम्हारे बगल में एक तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है मिलिट्रीली एंड इकोनॉमिकली, तो तुम्हें कहीं ना कहीं फिर ये चाणक्य नीति में भी है, आपको बैलेंस करना ही चाहिए। एंड फॉर बैलेंस you need alliance, you need very trusted alliance, very like-minded alliance. So if you see in Quad, there are 4 countries, both are democracies, both endorse the international law and rule based order, unless China। अब चाइना मैं क्यों बोलूंगा, क्योंकि चाइना का एक्टिविटी, इफ यू सी इन द साउथ चाइना सी, उनका एक्टिविटीज अच्छा नहीं है। क्योंकि आप अगर देखो तो उन्होंने एक अपना ही मैनिफेस्टेशन 9 डैश लाइन बना के रखा है, जहां पे वो बोलता है कि ऑल दिस लैंड आर एक्चुअली, ऑल दिस वाटर्स बिलोंग्स टू चाइना। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें अपना जो भी पॉलिसी है, डिफेंस पोस्चरिंग है, वो तो रोबस्ट करना है। साथ ही साथ में हमें एक्सटर्नल बैलेंसिंग, क्योंकि तो एक कॉन्सेप्ट है ना, एक्सटर्नल बैलेंसिंग एंड इंटरनल बैलेंसिंग। तो इंटरनल बैलेंसिंग तो हम अपना इकोनॉमी, अपना मिलिट्री को, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को बढ़ा के हम कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल बैलेंसिंग में यू नीड पार्टनर्स, ट्रस्टेड पार्टनर्स, जो तुम्हारे साथ दे सकता है। मतलब आई डोंट से कि वो आके उनका आर्मी आएंगे और यहाँ पे हमें हेल्प करेंगे। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग, बट या समटाइम्स जैसे अभी देखो ना, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो अभी ये नैरेटिव वॉर में अगर तुम देखोगे, आप लोग देखोगे, तो ज्यादातर जब फर्स्ट वॉर हो रहा था, तो उस टाइम में ज्यादातर, जैसे कि मैंने देखा था फ्रांस 24, एक आर्टिकल, एक न्यूज एजेंसी है, राउटर्स हो गया, उसके बाद आपका न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, क्या छप रहे थे वो लोग, यही छप रहे थे कि इसमें तो चाइनीज चैट्स ने बहुत अच्छा किया है, इंडियन डिफेंस, इंडियन क्या राफेल और S-400 को शूट डाउन किया या नष्ट किया। तो इसीलिए ना फिर हमें पार्टनर्स चाहिए, ताकि दे कैन आल्सो टेक फॉरवर्ड आवर नैरेटिव्स और आवर इंफॉर्मेशंस, व्हाट वी बिलीव और व्हाट वी एक्चुअली व्हाट हैपेंड। उसके बाद तो फिर इंडियन प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर DGMO के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दिखा दिया। तो दैट्स व्हाई समटाइम्स यू नीड अदर काइंड ऑफ सपोर्ट। तो उसके लिए हमें फिर ग्रैंड स्ट्रेटेजी में जाना पड़ता है। सो दिस इज
from my side this is जो मैं सोचता हूँ बाकी I just want to want from all you for your kind of closing remarks or closing point on this Siliguri corridor. Then we will take some of the questions which we have received. Okay, Labda. Yes. So yes, we are somewhere balancing ourselves in the in two points: the internal balancing and external balancing. And these 2 points, or these two polar, we are balancing ourselves. And I guess so far as the Chinese presence or its close proximity to the vulnerable location of India, of course, it is a rising concern for India from the point of view of security, territorial integrity, and sovereignty, and also its interest. Talking about what are the alternative ways that I have already mentioned about the multi-layered security steps, including soft power diplomacy. And as you talked, we are going beyond of that and talking about external balancing, creating alliances with the other nations, and thereby pressurizing China. And also mentioned about this the strait, the Malacca Strait, and eventually how it could be a kind of a pressure tactics on the part of India against China. But so far as China is concerned, China maybe so far as its trade is concerned, in terms of 80% of oil and 60% of gas from this strait. China, from the very inception, quite decades ago, started finding the alternative ways, including the CPEC or the Myanmar, China-Myanmar Economic Corridor from Huaicpai to coming. I don't. I'm sorry for this the pronunciation. I don't know the exactly how it is read. But again, it is also developing different ports, whether it's Ecuador, Hambantota, etc., and Coco Island. There also they are creating their presence. Now, having said that, China is altogether finding the alternative way. So now do India have different alternatives? If you talk about for example, China is considering to have land road alternatives, land routes, sea lanes communication, etc. India, whereas India is having this Siliguri corridor. Now we are having this siltway to Myanmar. Uh, can we have more alternative like that? Can we develop a good relation with Nepal and finding a new alternatives? Can we consider other way around? I'm not sure because I'm not a student of international politics. I may be required more deep studies to understand the developments from academic point of view. But my closing statement would be simple: that India's position in Siliguri corridor should be consistent with its administrative policies, its connectivity policies, and as well as the policies that is related to the common people. So then only we can have a comprehensive, multi-layered, a kind of solution or response to the challenges that we are seeing to the region, and of course, managing the internal instability due to the many, a kind of anti-India activities. As Apurva, you mentioned about a kind of the sentiments, whether because when India got independence, and in fact, before India got independence, two committees were set up by the Constituent Assembly in order to
have not only territorial integration of northeast, especially the hill region, to the proper the mainland India, but also a psychological integrity. Have we reached there? That is because considering so many secessionist movement and also porous border that we see, so many insurgencies, etc. So of course, this all internal instabilities need to do away in order to make the region more stable internally, as and again the external balancing that you all talked about. Thank you. Kalyan, Kalyan, hello, Kalyan. Kalyan. I think Kalyan having some network issue, right? Hello, Kalyan. Hello. Okay. Sulochana. Yeah. Okay, yeah. Am I audible? So I think Kalyan is having some network issues. So now I think we are coming towards the end of this session. So now we will have a Q&A session, and our speakers will be addressing some of the questions raised in the comment box. Our viewers have raised some questions, so I think the speakers should respond. So please, speakers. Apurva, please unmute yourself. Okay, Labda, can you see the questions? I just bring it into the screen. I যেহেতু চিকেন নেক আমাদের দেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করিডোর, তো আপনাদের বক্তব্য অনুযায়ী বিদেশি আক্রমণের সম্ভাবনা বেশি, রাইট? তাহলে কি এই অঞ্চলটিকে সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন করে দেওয়া কি বলছে তারপর করে দেওয়া উচিত, বা এরকম কিছু একটা হবে আই থিঙ্ক। যেহেতু চিকেন নেক আমাদের দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল, আপনাদের বক্তব্য অনুযায়ী এই অঞ্চলে বিদেশি আক্রমণের সম্ভাবনা বেশি, তাহলে কি এই অঞ্চল সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন দরকার? আপনার কি মতামত? আই থিঙ্ক লাভদা ইউ শুড গো इन दिस क्वेश्चंस, दिस इज वेरी पॉलिटिकल क्वेश्चंस, सो आप जवाब देंगे, यू कैन स्पीक इन बंगाली, क्योंकि क्वेश्चंस बंगाली में आया है, तो बंगाली में दीजिए, अच्छा रहेगा, if you comfortable with। हाँ, No, I'll try. যেহেতু union territory when you declared some part of a country as a union territory, it's more of a internal matters, and it has, because the first of all you have to understand, Karan, when it's come to security and integrity, is a union subject. So irrespective of whether it's a state or union territory, the center has exclusive control over national security. So it may, if required, can make certain arrangement and also establishments to face any such adversaries, kinetic or non-kinetic. So this is one. And the second, whether যেহেতু it's a strategically important, এটা কি or গুরুত্বপূর্ণ, এটা কি একটা ইউনিয়ন টেরিটরি করে দেওয়া কতটা মানে
like it's important. I don't think so, because it's more like it's when you declare a union territory a state, it's more a decision of there are fourfold policy that we follow, bringing administrative convenience. Second, uh, second is economic viability. Dealing with the national security and all these things to make the region integrate to India, not responding to the external one. So, but yes, from the point of view of bringing the capital close to the region, because if you see the distance between Siliguri corridor and the capital that we are having in Kolkata, that's far away, and administratively, it is a kind of we have a see a distance. So declaring it as a union territory may give a kind of that leverage administratively, but I don't know if there is a direct connection between being a union territory and security or national security. Because unlike Jammu and Kashmir, where we see that there is a kind of a less, when there were different, the Jammu and Kashmir, the case for Jammu and Kashmir was totally different. The reorganization that we see in 2019 in terms of revocation of 370 is somewhere the rationale that we see is threefold rationale. Integration, that is peripheral integration. The second is administrative efficiency, and the third is bringing the region in the mainstream development agenda. But I see from the security point of view, you know, so because to counter this insecurities that we are having for threatening from the side of this side, Pakistan. So this is not the case with because this region, of course, the infiltration from Bangladesh, we could have a good surveillance if the capital is near, right? So that could be one way, and also we could have a greatest good surveillance in terms of policing and etc. etc. So, but other than that, I mean, I may be missing some points, but that's my takeaway from this particular question. Kulyan, are you there? Or your network is good or not? Hello, Kulyan. Hello, Kulyan. Okay, I think still he is having some network issues. Okay, I just want to add one thing with Labdas, respond to these questions. কি যেটা বলছে এখানে তাহলে কি অঞ্চলটিকে সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় স্বাধীন, আচ্ছা, আমার এখানে একটা প্রশ্ন আমার এখানে একটা জাস্ট মানে কাউন্টার কোশ্চেন এটা যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন নিয়ে আসার দরকার আছে কি? তো আমি এটাই বলবো কি লব্দা বলছিল কি it may gives the defense administrative and strategy leverage আগার এটাকে আমরা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল করে দেই, তাহলে এখানে একটা কথা আসতে পারে কি যে এখন কি মানে the region belongs to state of West Bengal, তো এখানে কি কোনো ধরনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা সিভিল মিলিটারি বা স্টেট সেন্টার ফেডারেল স্ট্রাকচার বা রিলেশনে কোনো ধরনের কোনো প্রবলেমস বা কোনো ধরনের কোনো কোঅর্ডিনেশন নাই নাকি? ইফ there is everything okay with state and center, and I don't think কি इसका जरूरत है, মানে এটার প্রয়োজন আছে কি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল করে দেওয়ার। কারণ আমরা যদি স্টেট অফ রাজস্থান দেখি বা গুজরাট দেখি, ওইদিকেও বর্ডার স্টেট, বাট ওরা স্টেট when there is a war like situation or কোনো ধরনের এরকম সিচুয়েশন হয়, তো অটোমেটিক্যালি দ্য স্টেটহুড অফ না দ্য ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি তো হয়ে যায়। বাট হ্যাঁ, এখানে যেহেতু বলতেছে যে
এই জায়গাটা খুবই সেন্সিটিভ বা খুবই স্পর্শকাতর। তো তার জন্য কি এখানে আমরা যদি কেন্দ্র শাসিত করে দিই তাহলে কি এটা কি খুব একটা বেশি পুলিশিং হবে? आई थिंक ऑलरेडी पुलिसिंग আছে। एंड सिंस एज फार एज द डिफेंस मैटर इज कंसर्न, ये तो स्टेट में ही आता है, यूनियन टेरिटरी में ही आता है। তো স্টেট যে কোনো ধরনের স্টেপ নিতে পারে আমার মনে হয় নিজের যে কনস্টিটিউশনাল ইউনিয়ন টেরিটরি ইউনিয়ন লিস্টের ভিতরে যেটা পাওয়ার আছে এটাকে ইউজ করে করতে পারে। অ্যান্ড বাকি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস বাকি তো লব্ধা বলে দিল। আর বাকি टेक्निकलिटी ভিতরে কি আছে আর एंड आई ऑल्सो मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा बिकॉज I have very limited knowledge about this. No, and there is another case that I into set lights on. যেমন ধরো যখন অরুণাচল প্রদেশ হচ্ছে 1976 এ ইউটি করা হয়েছিল, ওকে ঠিক আছে। Since till 1971 it was under the since 1954 it was under the I'm not sure the date, it was under the Ministry of External Affairs. তারপরে সেটাকে হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স এ আনা হয়েছে। হোম অ্যাফেয়ার্স এ আনার পরে যখন দেখা গেল যে অরুণাচল প্রদেশের ক্ষেত্রে ওরা হচ্ছে পলিটিক্যাল কনসিয়াসনেসটা হচ্ছে পাচ্ছে, ও মানে ইনক্রিজ হয়ে যাচ্ছে, তখন ওদেরকে হচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজ রাইট দেওয়া হয়েছিল বিফোর declaring it as a union territory in 1968, I believe. So so they got franchise right, they got Panchayati Raj before state was made, before the UT was made. So now অরুণাচল হচ্ছে যেখানে হচ্ছে অনেক স্ট্র্যাটেজিক্যালি মানে from the geopolitical point of view it is a borderland or the frontier which China has a claim over the most of the region, but despite that they have eventually declared in 19 declared it as a state. ঠিক আছে, তার জন্য সেই যে স্টেটের ধারণাটা বা স্টেটহুড দেওয়াটা বা ইউনিয়ন টেরিটরি দেওয়াটা সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ a kind of administrative step to bring efficiency to for the economic development, and of course national integrity ব্যাপারটা থাকে, কিন্তু external সিকিউরিটির ব্যাপারটা কত ডাইরেক্ট থাকে না। If you go through the 1955 State Reorganization Commission report and also the subsequent reorganization that happened in India in 1950s when the language was the main factor when the states were created. Second, when the ethnicity became the crucial factor and northeastern regions or have gotten this statehood in 1970s and 80s, and then you have development induced or kind of reorganization and also ethnicity and development induced reorganization in terms of Telangana, Uttarakhand, and 2001. yes, 2000 and Uttarakhand and then Chhattisgarh. Then finally we also have this one, the recent one, 370 abrogation, which I said government has not said that they are doing for the external security. What they said, integration of peripheral regions to the mainstream in terms of development and bringing administrative efficiency. ঠিক আছে, Or also so given inclusiveness-টা বাড়ানোর জন্য autonomy, right? And also the no government also tried to autonomy, the question of autonomy is altogether different, because when we are talking about if you see the 2014 reorganization of Telangana and Andhra Pradesh, right? What was the no, in Telangana they have a long standing demand in terms of they have a kind of a their own ethno-territorial territorial aspirations. Historically they had a kind of a different territorial conception, so it was altogether a different case. So why I was giving আমি অরুণাচলের কথা কেন বলছিলাম, কারণ হচ্ছে অরুণাচল is also example, despite having a national security challenges externally, it is continued to be a state. It was UT before and ceases
to be UT in 1987 KT6 when it become altogether a state, right? So that's my point. So I don't see the direct connection, but yes, what I said, যে রিজনাল ইনস্টেবিলিটিটা এটাকে কাউন্টার করার জন্য স্টেটের পজিশনটা পুলিশিংটা মানে আরো বেশি একটা ইসে হবে, like it's become more a kind of a strengthened one. So less small space গভর্ন করাটা ইজি। আর যেই আমাদের ক্যাপিটাল হচ্ছে কলকাতায় 600 কিলোমিটার, এখানে কি হচ্ছে কথায় হচ্ছে, for example you see go to Panitinki, you have open border, no visa regime. You go to this Ambari and all these things, you see this the borders although fenced, many places you have markets, and there are different ways how they are, this has become one of the major problem of India, Bengali Bangladeshi immigrants which are illegally entering into India. So maybe that issue সেটাকে ডিল করা ইজি হয়ে যাবে। That's my opinion, but I don't know. Okay, Sulochana. Okay, I think we have come to an end now. The discussion is over. So, yeah, thank you to all our speakers for taking your time and effort and sharing your thoughts. And it was really insightful and enriching. And I hope our viewers also found it helpful. So, yeah, thank you so much for joining us today. And until next time, stay curious, stay informed, and keep questioning because questioning is where truth lives. She might have lost her network, I believe. So yes, Apurva. ऐसा ही लग रहा है, I think. So let's close from our side. So thank you very much for such a lovely session with you, and you're doing great job. And thank you to the listeners, and also this Mehboob for asking a question, which is quite relevant so far my studies are concerned, on border studies and everything, like why borders are created, and again redemarcated, the rationales they follow. So thank you for having me here, Apurva and Kalyan. I wish to have, looking forward to have more session like this on, of course, on the issues where I can give more contribution than today. Thank you. Okay, love the. Just wait, Sulochana, please unmute and turn on your camera. Okay, just give a lot of thanks. And sorry, I was having some network issues. So, yeah, I would like to thank
all our speakers for sharing their thoughts, for your time and effort in this discussion. It was really informative. It was really enriching and insightful. I hope our viewers also found it helpful. So, and for the viewers, if you have any questions, comments, or feedback, please feel free to share on the comment box. And so, for now, this is all. Stay tuned for the upcoming sessions. Thank you once again for joining us. Shubh Ratri. Okay. Good night, Labda. Thank you. Okay, good night, everyone.